So the topic which we covered yesterday, that was about the file system. Yes, Banori, Salman and Tabish are not here. Although Tabish तो lose नहीं करता होता class में, लेकिन maybe some reason, some serious reason might be. So what we are covering today is the, first of all, we will talk about the GUI, because what we have seen that the CLI, the professionals. Assalamu alaikum sir, last two classes I missed, but I have. Okay, fine. Muhammad, that is the benefit of the online classes, that whether you are in Islamabad or wherever you are, you can easily take the classes and you can learn. And I provided you even the first lecture recording as well. I will provide you the recording of the second as well tomorrow, inshallah, or today even, maybe after this lecture, because probably the second lecture will be available to us for sharing with you people. So gentlemen, what we are covering today is the Linux GUI, because as you know that Windows basically provided, and before the Windows Mac operating system provided the GUI type of functionality to the users, and that was easier as compared to learning the CLI. And as I said to you that when I was working in PTCL, so I worked on different systems, including the Siemens system, for example, the Ericsson system, for example, the NEC system, for example, the Alcatel system, for example. So all of them were the CLI based. There was no GUI there. So you have to be an expert, although you have a lot of power there to do these jobs as per your choice. But in the telecom world, the probably ZTE was the first which is the Chinese brand, who introduced the GUI part and brought the Windows as an operating system. Okay, so that is the reason, as you know, some of the operating systems which are Linux based, which are the distribution of Linux, they also introduce the GUI. So you should learn both, but definitely you should have more stress on the CLI. Last jitne time whatever I did during this lecture on this chapter number 4, that was mostly I worked on the CLI to show you how good it is. Most of the time I worked from the terminal, from the console. But today, definitely, we want to look at this part as well. That for minor tasks, you may be doing the jobs based on the GUI. Okay, graphical user interface. So in the graphical user interface, you have the X window system, which is nothing but the graphical user interface. X window in Linux terminology is called the graphical user interface. And for this, you have a window manager, which is the graphical user manager you may call, to define and to use the graphical components. Especially this X window system is used. This X window system is used when you, okay, Tabish has joined us, that's nice. So only Banori probably, Banori and Salman mostly late hota hai, but we need to continue. So gentlemen, what you should learn or what you should consider, that there are different window managers. So different distributions uses different distributions. You already know that we take the kernel of the Linux and we add different tools, applications, services to this, for example, to this kernel, and it become a new distribution. For example, as you know, for example, this Linux Arc is a distribution, Red Hat,
Red Hat is there, Fedora is there, Ubuntu is there, the Debian is there. So all of them are the distributions of Linux. So they use different window managers. For example, if I start with this the my Oracle as well, Oracle VM VirtualBox, and I want to start the Ubuntu. I want to start all three today so that you should be comfortable. Okay, so you can see that we have here. I'm starting the Ubuntu, and let me tell you that your security onion is exactly this Ubuntu. So we took the Ubuntu operating system, added the tools which are used for monitoring, for analysis, blah blah blah, and it became the new version, may I say, which is called the CyberOps Security Union. While the CyberOps workstation is working on, as you know, Linux Arc. तो मैं इन सबको तीनों को आज इस्तेमाल करना चाहता हूं ताकि आपका खौफ खत्म हो जाए. So I start the CyberOps as well. So you can see the group is the loader, the GNU GNU group. This is basically just like the anti-loader. So it is the loader of the operating system. So we are loading the Linux here. For example, in the you can see a starting version, blah blah blah. So we started with the group, and you should know that the X window. When I talk about the X window, I mostly have different window managers. Like for example, you may have heard the name of Genome, or you may have heard the name of the KDE. Okay. Gentlemen, ये जो messages आ रहे हैं, they are very sad. And the sad point is that one of our senior professor from the mechanical engineering department, with the chairman of the department as well, Naeem Saab, uh, he is in hospital and he's on the ventilator due to the corona. So I request all of you to please pray for him. Okay, gentlemen. So I start this with CyberOps, CYBEROPS. So this is the Linux. Ubuntu is here. Ubuntu भी start कर लेते हैं and password दे देते हैं इसको, and आपकी मर्जी के लिए I start the security onion as well to show you that security onion and Ubuntu is exactly the same with additional, definitely additional parts. So here is the security onion.
तो जितनी देर में ये ऑन होता है, जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि हम फिर वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह. Okay, so it is analyst A&E, if I am correct, analyst in CyberOps. Yes. Okay, gentlemen, so let's continue. जितनी देर में ये ऑन होता है होने दें इसे, और हम कंटिन्यू करते हैं. एंड okay, so security onion is also there now. So everything we have. Definitely, I will not be talking about the SQL, Kibana, and Squirt and all this. We will be talking it later, inshallah. Okay. Okay. So I minimize this and I go to here. So, gentlemen,
हम जो चीज आज देखना चाह रहे हैं वो है कि बेसिकली ये जो एक्स विंडो की फंक्शनैलिटी है, दैट इज बिकॉज ऑफ द विंडो मैनेजर। तो इसका मतलब ये है कि आपने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन अपना you took the kernel, which is Linux kernel, then you added different tools, plus you added a window manager. So when we are working with the Ubuntu, mostly we have the window manager, which is Genome. It is the name, Genome is the name of the, which has a very much similar appearance to the Windows. Windows 10, Windows 8, like Windows XP, for example. So you can see here, gentlemen, what you are seeing here in the Ubuntu, this is exactly, this is the, जो आप देख रहे हैं, this is the Genome window manager. Okay? So sometime we have the Genome. If you look at here on this desktop, so you can see, gentlemen, that there are different things. This part is called the show applications, or may I call it the application menu. Application menu. So yeah, when I click it here, the applications which are installed, they are, I can see them easily, number one. Number two, I can search other applications as well. If it is not here, this is the frequent one which I have used. For example, आप लोग जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं टेक्स्ट एडिटर भी, तो आप देखें, जस्ट क्लिक द टेक्स्ट एडिटर एंड टेक्स्ट एडिटर इज अवेलेबल टू यू. And in the text editor again, what type of text editor you want? For example, you want a compile with the C or a C sharp or with the C++ or the C header, whatever. Even the your well-known Python, MNOP Python 3. So it will become a compiler for the. It is not, sorry, Python is not the compiler. It is the interpreter. आई होप के मेरी बात से एग्री कर रहे हैं. लेकिन मकसद यहाँ पे ये है कि जो चीज आपको बताना है कि यू हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड दिस इज द एप्लीकेशन मेन्यू. देन दिस इज द डॉक. जिस तरह के आपके उसमें आर्क लिनक्स में आपने देखा कि डॉक जो था, दैट वाज हियर, द डॉक वाज एट द बॉटम, the like search, terminal, blah blah. So you have in the Ubuntu, you have the dock at the right side. So this is the dock. Different applications are, for example, if you click the Ubuntu software, if you click the Office, if you click the Rhythm box, files, for example, here you click and you can look at very much similar to the, here I work with the Windows, which is their file explorer. So basically, this is very much similar to a file explorer file. And when it has a dot, which means one of the instances open, you can open another one as well. For example, you minimize it and you can open it here again. So that is something, gentlemen, that this is called as the Ubuntu dock. Okay. Then the third thing which is important is your calendar or the top. This is been given by the Genome. This is given by the Genome. This is the calendar or date. 8th January, for example. 8th January, if you want do not disturb, something like this here, you can activate like here, or you don't close it. We are not interested here, for example. Okay. Okay. Then is the next part is your startup status menu. Status menu is this one. For example, because this is basically a the VM, but still the settings are here. Mostly these settings are for your wireless card. As you can see here, no VPN connection wire. It looks like a wired, although it is not wired. Basically wireless is being used by the Windows, and it provides them with the virtual interface card, so it looks like that to the VM that it is connected through a 1 gigabit per second wired connection. However, we know that it is not wired, it is a wireless. No problem.
Then it has the, you can lock it, you can on off, you can do the on off, whatever you want. So this is basically the status menu. So you should remember the application menu, the Ubuntu dock, the activities. So in the activities, mostly you have the search. If you want to do some search, you want to do some activity, you can have here, you can have the calendar, you can have the status bar. So this is basically the view of your graphical user interface in case of the Ubuntu. Very nice. Is there any question, gentlemen? Seems no. Okay. So let's continue then. So then is the, so I explained to you this all, that this is the application menu, this is the dock, this is the calendar, this is the status. So all of that is the your desktop. So it shows us that it has very much similar view, may I call it, like a Windows machine. So basically, Ubuntu has gained more importance as compared to the other flavors of the Linux, mostly because it is being used by the layman. But it has the capability, power. It has the power of the Linux as well. So you can play with the Linux as you want. So I have already explained what mean by the application menu, what mean by the Ubuntu dock, what mean by the top bar, what means by the calendar, the activity, the status menu. So I explained you all of these areas on the desktop. Then comes to the working, that is important now, because GUI is for the normal user, but for maybe I call it for the layman, but this is important from the our perspective. So gentlemen, now I come to the for both. I will be not only showing you here, but I will be performing on, and it has been recorded. So it is good that we will be installing and running applications on a Linux host. So gentlemen, I will be doing it for graphically as well as on the CLI. So gentlemen, first of all, मैंने last time भी ये बात explain की थी कि if this is my, I want for example the terminal. So the terminal is here, and I want to install, for example, I want to update my system. So how I will be doing this? You already know that I will be using sudo, which is switch user super user do. So, and I want, as I told you earlier, it is apt-get and update, update. It asks me the password, and the password, and it starts fetching files, and basically what is this apt? It is the package manager. It is the package. It is a package manager, whose job is to fetch the files and place them at the right point. मैं इसके साथ साथ आपके साथ एक और भी एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं जब तक ये होता रहे. आप यू कैन सी हियर एंड इट इज कंप्लीट. यू कैन सी हियर इट इज डन. ठीक, it is good. But when we are working with the different distribution, for example, when I am in the Linux, on a Linux Arc, and I want to do the updation, for example, so it is not like apt-get. Here it uses the pacman, as I explained you earlier as well. Package manager. Pacman means package manager, and you have some options like SYU for updation, and dash नहीं लगाया. Sudo pacman dash SYU enter password analyst नहीं cyberops CYBEROPS, and it starts synchronizing. As you can see here, it is fetching. So what I am doing, as I told you earlier as well, that on the Linux host,
from the security perspective, it is very important that you should keep your machine update, as we do on the Windows machines. For example, updates. Check for update like in Windows. So I showed you check for updates. It has been done yesterday during the class. I hope you remember. Okay? Check for updates. So now all the three operating systems, Windows, Ubuntu, and Linux Arc, all of them are updating themselves. So being a security analyst, it is my job, it is my duty, and as an instructor, as a teacher, it is my job to tell you that you have to work with these updates. G, any question? So he's asking, replacing this with this, yes or no? Starting full system upgrade, yes. Proceed with installations, yes. So you understand now, gentlemen, that how I can work with the with the from the CLI, from the control line, from the command line, sorry, from the command line, how I can upgrade. मैं अब आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं जस्ट फॉर योर क्वेरी कि ये तो आप कहेंगे जी सिर्फ आप अपडेट कर रहे हो, नहीं, अगर मैं अपडेट के अलावा भी कुछ काम करना चाहता हूं तो लेट्स मी गो टू द लिनक्स मशीन अगेन, and for the time being I close this terminal and I go to Asan, and then probably to the documents. It is not there, document there, and I go to the, okay, it is here. So it is Omnet plus source Linux 1. So I extract it here. Extracted means it is compressed. TJZ is like WinRAR or WinZip in Windows. तो मैं एक ये बताना चलूं कि Omnet plus is basically a simulation framework, very important simulation framework. So docs, and I want to go to the install guide. And in the installation guide, you can see I want to go to the Ubuntu, and you can see here, gentlemen, can I increase the size? Yes, I can. 100. And you can see, first of all, what I am doing. Gentlemen, I am apt-get update. So I updated my, complete this. Now what I am doing, sudo apt-get install. चले मैं इसको भी रन करता हूं ताकि आप देखें इसमें पाइथन और सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी. तो I just copy from here, and I copy from here and I paste on the terminal. So what I'm doing now, gentlemen, I am, where is the terminal? Terminal is all okay. It is free for me.
I paste it here. So what I am doing, look at here. It is sudo apt-get install. Now I'm installing, for example, the C, G++, blah, blah, Python, blah, blah. And probably I missed something. And you can see here. I should go back to this Omnet. Docs. Okay. No need to do this, but I should terminal archive document viewer. Shayad I missed something. Hmm, 75 पे ले आता हूँ इसको ताकि yes. So now I copy from here and it is Control C and I go to the terminal and I paste it here and I say okay. So you can see here now it has been done. But जो जो मैंने चीजें इंस्टॉल करने के लिए कहा वो इसे इंस्टॉल कर दिया. तो कहने का मकसद ये कि व्हाट यू आर डूइंग sudo apt-get install. इफ यू वांट टू इंस्टॉल, जैसे पहले मैंने किया अपडेट, तो मैंने कंप्लीट अपनी रिपोजिटरी को अपडेट किया. नाउ मैंने उसे बताया कि नो जी, फॉर एग्जांपल इंस्टॉल फॉर मी द TCL, install for me the GCC, install for me the G++, install for me the Bison, install for me the Google Chrome, sorry, Python. So basically it is the some way to install specific or specified tools. So what is the command? Sudo apt-get install, and then whatever the name is of the software or application you want to install. Similarly, if you can see here, gentlemen, now I say sudo apt-get update, जो कि हमने already किया हुआ है, and then I want to install some other things as well. So basically what he's telling you is to install the OS development package, which is sudo apt-get install, and then this is the name of the device or tool. So I copy from here. I copy from here to just show you, Control C, and I do the Control V on the terminal. I do the clear first, clear, and then I paste. Then I paste it here. So sudo apt-get install. What install? Install this something and enter. So it being installed. Yes or no? Yes. आप देख रहे हैं कि मैंने आपको दो चीजें बताई कि आप किस तरह यूनिक्स Ubuntu मशीन्स पे किस तरह पूरा का पूरा अपडेट करते हैं या कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मशीन के ऊपर. सो आई होप you understood this. Gentlemen, very calm. Where are you people? Not getting? Yeah. Salman, Fozan, where are you people? No response from you. Yeah, is clear. So what I explained to you? Two things. Very nice, Tabish. I explained to you two things. Then still it is continuing. Still it is continuing. It may take time. So this is something how to upgrade and how to install specific applications. For example, अभी हम कुछ देर में चले और चीजें भी इंस्टॉल करेंगे. For example, we install the rootkit. ठीक है, चलिए ये कंप्लीट. Do you know about the rootkit? तो this is basically a malware. तो ये जो ही कंप्लीट हो जाए तो आई इंस्टॉल दिस एज वेल.
अच्छा, इस तक पहुंचने जब तक ये खत्म होता है, ये मैंने किस तरीके से किया? आई यूज द CLI. Now I want to use the graphical way. So how to do it? Let's learn this as well. Go to the activity and go right in. तो एक्टिविटी में क्या होता है, जितनी भी आपकी विंडोज ओपन है वो सब आपको दिखाई दे रही हैं, और इसके अलावा भी यू कैन सर्च. So gentlemen, I write here software update. Software as software update. So you can see here software update. बहुत ही चीजें एक जगह पे खोलने की कोशिश कर रहा हूं. Yes, checking for the. So now I haven't given any command. I haven't written apt-get sudo apt-get update. I've used the software updater, which is just like a window. जो मैंने अभी कुछ देर पहले किया था विंडो में, just like this. I went to the updates and I just clicked the check updates. So very much similar is in the Ubuntu as well. You can see here, checking for the updates, waiting for, in other words, waiting for the apt-get to exit. तो it is waiting क्योंकि apt-get already चल रहा है, तो दूसरी उसकी इंस्टेंस नहीं चल सकती. जब ये कंप्लीट होगा, as it is 77% over, so with 30%, around 20% it is remaining. So as it will complete, then it will this GUI part of update will also run. So do you got that we have both versions? We can do it with the GUI and we can do it, but GUI is as a limited, although layman feels that it is more flexible, but the professionals feel that the more flexible is the CLI. And you can see CLI is working 91%. Whatever the application I installed, that has been that is being installing. The system is installing it. After this, I will be installing the rootkit. Check rootkit. Because you know what is the, you have different malwares, and checking the malware is very, very important. Among these malwares, it may be a virus. However, as compared to the Linux machine, as compared to the Windows machines, the okay, as compared to the Windows machines, the Linux machines are considered to be more powerful and more safe. However, the applications which are written by people like you, so these applications which provide services, which act like a server, for example, you install a Apache server there, or you install the Nginx server there. So this is written by another person. This is not part of the kernel. So definitely it might be, there may be some vulnerabilities there in the application, and they may be exploited by the bad guy. सही है ना? So one of these such is, it may be a virus, it may be a worm, it may be a Trojan horse, it may be the adware, it may be the scareware, and as you saw, as this app get finished, it start queuing the software resources. Finished. Let's see what is the response. So you can see here, gentlemen, that he's saying that there is around 498.6 megabytes will be downloaded if I want the complete updation of my software. If I want, I can click the install now, or if I want to, I am an expert, then I can, for example, I'm not interested to update the Firefox, or I'm not interested to generic Linux kernel header. So I may unselect it, or I can select it depending. However, I'm not interested for the time being to upgrade this, so I can say here, for example, remind me later. So you learned about how we do the updations using the CLI, how we install certain applications using CLI, or we use the graphical user interface, GUI part, the Genome X window, our window manager, as I showed you. So do you have any question, gentlemen? Yes, very right. The
Sir, will we use Omnet? No, gentlemen, in this course, Omnet is not required. Omnet is किसी वक्त आपका दिल चाहे तो हम कोई क्लास रख सकते हैं, लेकिन इतना आसान टूल नहीं कि 2-3 घंटे में सीख लिया जाए, लेकिन एटलीस्ट नो हाउ दे सकता हूं कि किस तरह ऑमनेट काम करता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके डिपार्टमेंट में मैंने बाजू का देखा कि NS3 के वो लगे होते हैं कि NS3 आपको सिखाते हैं। ऑमनेट इज समवट सिमिलर और इवन मोर पावरफुल देन NS3. So it is a emulation tool, simulation tool, whatever you call it. Anyhow, so very rightly mentioned by Tabish that rootkit is also a malware whose job is to increase the when a computer become compromised. So this rootkit may be installed there and it may increase the privileges of a certain user, and it may make the user as a create a user and make it a administrator, which means the root. And once when it become a root, it can do anything. Then it can do anything. So we want to check, first of all, we want to install the check rootkit, and then we want to play with it. For example, how I can install sudo apt get, and the name of this is chk check rootkit, check rootkit, and sudo apt get install, sudo apt dash get ins install chk rwtkit. हो गया जी, very nice. He's saying that ready for this. Rootkit is being already, rootkit is already the newest version. Okay ji, so it is already installed there. So now I run this rootkit. So it is sudo check chk rootkit. So you can see not found, not infected, no suspicion files, nothing found. So which means my machine is in good shape, good hands. Nothing found, not infected, blah blah blah. I'm getting, so this is something which means at least the rootkit is not on my computer, on my host. And this is my topic, installing and running applications on the Linux host. तो मैंने यहां से पढ़ने की बजाय मैंने ये सारी चीजें आपके सामने मशीन पे करके दिखाई. So now I can very easily read that many end user applications are complete complex programs written in a compiled language. To add in the installation process, Linux include a program package manager, which is, for example, like apt-get, like pacman or others. They are the or DK on the Debian. That is another DPKG. So all of them are the package managers. So by using the package managers to install a package, which means a program, an application, like I installed the application check rootkit, all the necessary files are placed in the correct file system location. So this is the job of the package manager, to place the files at the right place. The package is the term used to refer to the program that all its supporting files. So example apt-get, example DPKG or pacman. So these are the examples of a different package manager used in different distributions. So gentlemen, what he is saying that it is run and no problem is being identified, which is nice. Something has been asked by Fozan. A type of antivirus? No, Fozan. It is not an antivirus. Antivirus is, अगर एक layman कहे तो I may say to him yes, but to you I will say no. It is an anti-rootkit.
It is not capturing the viruses. Virus, you know, is a file which attach itself to a executable file, and when this executable file works, when this executable file runs, this virus program also executes and do its job. While the rootkit is you may call it a malware, but you cannot call it a virus, because this rootkit job is, as written by Tabish, is to enhance the privileges of the of a certain user. You got my point? And also hide, or दूसरा क्या है? If you have this rootkit, so it threat actor actions, whatever the actions, because it is basically the privileges rise. Once your privileges are more, then you can delete the log files which are created, because you know, administrator can do any job. So in this way, the threat actors actions are hidden from you. Are you comfortable with my answer, Fozan? Good. Okay, so I explained to you this, that if you do install a package by name, so you can write it here, pacman -s and then the name. Like the name was check rootkit, or sudo apt-get install in the Debian or in the Ubuntu, right? Even you can do the same on the Linux, on this security onion, as I can show you here. So it means क्या आपको डरने की कोई बात, CYBEROPS, and I go to the applications, and in the application I go to the utilities probably, and then to the terminal, and here I do sudo apt-get update analyzed cyberops. So you can see here it is working. So you can see here as well Ubuntu. So basically it is Ubuntu, 14% done. So we mean no need to डरने की कोई बात नहीं. You can play with different distributions. Okay, gentlemen, so let's continue. So here is the example for the arc. For example, you want to remove a package, so you can say apt remove. जैसे आपने apt install किया, sudo apt-get install, sudo apt-get remove. For example, अगर हम इसी rootkit को remove करना चाहते हैं, तो how we will be doing it? Very simple. I come here, I say sudo apt-get remove, and then the name chk root kit. Yes, remove. तो थोड़ा सा आपको मैंने फ्लेवर यूनिक्स का, लिनक्स का दे दिया. So it is gone. Probably, not probably, definitely. Now I do sudo apt-get check root chk rootkit. Not found. Removed means, right, gentlemen? Removed. So I install sudo apt-get install check root kit. Installed again. So you can play with this on your machine. So I did this all. So I told you on that you can play with the software updater as well.
So you just click it and it will show you what is available. Updates are available. It's your choice to tick or to allow or disallow. Okay, now I come to one thing further, which is the processes. So gentlemen, you know, we have already played a lot with the Windows machine. In the last chapter, I talked about the processes. For example, even if I go to the Linux machine, this machine, sorry, ये हो गया. If I go to my, उसकी जरूरत नहीं है. If I go here and I go do the Alt Control Del, or I am not interested in the Alt Control Del, then I can use the tool as I provided you, sysinternal, if you remember. So what is it showing me? The processes. What are the processes which are running on my machine? Types of processes even. And what type of processes are there? The background processes, the window processes, and the application processes. So similarly, we have the processes in case of the Linux as well. For example, you can see here, gentlemen, that when I use the PS, for example, so I close it here and I go to again to my Ubuntu machine and I clear it so that you should have the here, and I do the PS. So it tells me four things. What is the process ID? What is the terminal from where this command has been issued? How much time this command or this process has taken, and what the command was given. I can show you even more. CMD, PS dash capital A. Enter. So all the processes which are running presently, that is its information has been I have received. You can see here again the PID of the process, the terminal used, the time it consumed, the CPU time it took, and the command which was so it means when this like when I showed you the windows in the task manager, similarly I have so why it is important. For example, you looked at some of the bilkul usi tarah when you are working with the Linux machines, when you are working with the Windows machine, and you found some process which is not good, might be some virus, or might be some because of some rootkit, or might be because of some adware or spyware or spareware. It can be anything. It can be any malware. So क्या उसको मैं चलने दूं हमेशा के लिए? No. स्पेशली बताऊं आपको जेंटलमैन के सबसे मुश्किल जो होता है रूट किट को पकड़ना होता है. क्यों मुश्किल होता है कि बाज़ औक़ात तो रूट किट को पकड़ने का एक ही रास्ता ये होता है कि आप कंप्यूटर को, अपनी मशीन को एक बूटेबल डिस्क से बूट करें, फिर बूटेबल डिस्क से बूट करें. जैसे आप अच्छे लोग जो होते हैं वो अपनी बूटेबल डिस्क हमेशा तैयार रखते हैं, उससे आप अपने कंप्यूटर को बूट करें, अपनी हार्ड ड्राइव को माउंट करें उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर रूट किट चलाएं. अगर आप, क्योंकि उस वक्त वो मशीन चली नहीं होगी, वो प्रोसेस चला नहीं होगा. अगर ऐसा नहीं करते आप और आप रनिंग मशीन के ऊपर रूट किट को चेक करने की कोशिश करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू विल नेवर बी एबल टू गेट दैट. Gentlemen, any question? No question? Okay. Very nice. One of the best tool made by, yeah, it is one of the best tool made by the hackers, by the bad guys, is the rootkit. So अपने आप को बचा के रखिए इससे. Ransomware से भी ज्यादा dangerous है. Yeah, it is a black hat, definitely black hat. So okay gentlemen, so let me continue then. So बात कर रहा था मैं प्रोसेसेस की. तो आपने अब प्रोसेसेस को भी देख लिया कि प्रोसेस क्या होता है. Whenever a program starts, जैसे मिसाल के तौर पे यू रिमेंबर, फॉर एग्जांपल अगर आपको रिमेंबर नहीं भी है तो मैं आपको उधर भी बता सकता हूं दोबारा ले जाकर सिस्को में
और साइबर सीसीएनए सिक्योरिटी नहीं, साइबर सिक्योरिटी में या और आपको रिसोर्सेज में मैंने आपको नो टूल्स में मैंने आपको ये सिस इंटरनल सूट दिखाया था और इसमें मैंने आपको प्रोसेस प्रोसेस तो कई प्रोसेस जो होते हैं वो साथ साथ स्टार्ट होते हैं। जी, प्रोसेस ये जी। अब आप देखें कि कई प्रोसेस व्हाट्सएप के हैं, तो एक प्रोसेस नहीं है, एक व्हाट्सएप चल रहा है, मल्टीपल प्रोसेस उसकी वजह से। तो आप देखें कोई ग्रीन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी स्टार्ट कर दूं एज को, तो जो ही मैंने एज को क्लिक किया इसका एक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और जो ही मैं कोई इस प्रोसेस को खत्म करूंगा, you can see many many processes are there. Similarly, when I, if it is there, yes, and I kill it, सो यहाँ पे एक प्रोसेस आपको नजर नहीं आया लेकिन वो खत्म हो गया। तो बेसिकली व्हाट इज बीइंग डन हियर इज द प्रोसेसेस। सो डू रिमेंबर वन थिंग मोर, कि लाजमी नहीं कि एक प्रोसेस जब एक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो वही प्रोसेस जो है वो एक प्रोसेस नहीं, वो अब अपने बच्चे प्रोसेस पैदा कर सकती है। क्यों जरूरी है ये? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाई द पीपल आर लिविंग इन टुडे? नाउ ओनली 3 people आर देयर। Yahya has left, मोहम्मद has left, I don't know why। एक वक्त में 8 भी हो गए थे। 8th पे कौन था? मोहम्मद, okay, Yahya is back, that's nice, Yahya is back, so it's nice। So gentlemen, what mean by the process? So process is a running program. Now this running program may create a single process or multiple processes, or a process can create the child processes. So how this child process is created? By using the fork, by using the fork command। So basically hota kya hai कि these two processes, when you fork it, it creates exactly the same process but with a different PID। मिसाल के तौर पे I start the whiteboard, I start the whiteboard and I give you an example। For example, I have an Apache server, or I have a Samba, or I have the Nginx, anyone। So basically, it is a server, which means it provides services। Okay. So gentlemen, आपने इस चीज पे कभी गौर नहीं किया, ना मुझसे कभी पूछा। For example, this is your server, and there are multiple clients। This is client number 1, control C, control V, control V, control V। So you have multiple clients. You have multiple clients, like here, like here, like here, like here, like here। Okay. So when you are, for example, if it is a web server, so you know that it will start a, आपने कभी इस पे गौर नहीं किया, लेकिन especially I expect from Yahya, because he's a software guy, more software guy, when you request definitely on a well-known port number 80, so you send a request on port number 80। तो अगर ये दोनों की बात शुरू हो गई तो ये पोर्ट तो बिजी हो गई फॉर एवर। फौजान ऐसा ही है ना? इसका मतलब है कि फिर तो ये जो इसका और कोई है, मिसाल तो ग्रीन वन कैन नॉट कम हियर, दी black one cannot come here, and so on। But what happens when it comes here on port 80, it forks a process which comes to another port, maybe port number 5000, maybe port number 55,000, whatever। And this communication then leave this port number 80 and start with port number 55, and this port number 80 become vacant again।
And now this green one request in port 80, it forks another process, and this process start listening at 50,000, 55,001, for example, and this green is shifted here. Then the black is comes to this port number 80, and then it is another process is invoked or created, or a child process is created with a different PID, but it listens to on another other port, maybe 60,000, and this black one is shifted there. And in this way, a single server provides you multiple single application, provide services to many users. Jitavish, does it make sense? सर रिपीट प्लीज। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही मैं चाहता हूं कि आप पूछें। द क्वेश्चन इज, जैसे मैंने अभी आपको कहा, मल्टीपल एग्जांपल दे सकता हूं। एक मैंने आपको एग्जांपल अभी दी, एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दी, because Muhammad is not there, so I can use Urdu as well. So if for example I said this is my server, so you know if it is a web server, so it will be always listening on a single port, which is port 80. It cannot listen on any other port, because the rest of the world never knows. So it will always be listening on port 80. If it is a Samba, it means it is a file server. So it will be always listening on port 20 or 21. If it is an email server, it will be always listening on port number 25. Because we have read in this chapter that there are well-known ports for well-known applications. So as I said that, for example, this is your server, which is a web server, where you have installed Apache, for example, Apache D, HTTPD. So it will always listen on a specific port, which is port number 80, which is known to all these clients in the whole world. So you request on port number 80. So then when you request on this port 80 to an application A1, for example, Apache, this application creates another process, which means force another process, which means create a child process and give it, for example, port number 50,000. And now this process, black process, is here. So this port is again free. Now the green one or the red one comes on port number 80. Again, this application creates another process, creates a child process, and this child process is given, for example, port number 51K or 50,001, for example, or 5,001, for example, whatever you know, or 50,001. And now this red one is given here. So the Apache is there. Apache is behind this process. Now another green process comes, and it definitely asks on port number 80. Again, Apache creates another process, and this one starts, for example, at 57,000. And this is shifted here. Apache is serving him, and the port is again vacant. And this way, a single port is serving many users. That is done in the for email as well, for any server, any service. क्योंकि एक पोर्ट पे तो एक ही बंदा काम कर सकता है। अगर एक लग गया, एक घंटे के लिए लगा रहा, आप एक फाइल डाउनलोड कर रहे हैं एक घंटे के लिए, बाकी दुनिया को वो चीज नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी जी? आई रिपीटेड। ताबिश, एनी क्वेश्चन, एनीवन, एनी क्वेश्चन? क्लियर? ओके, गुड। ऐसे भी सलमान को और याया का मुझे नहीं पता, आपको तो ऑपरेटिंग सिस्टम का और सिस्टम प्रोग्रामिंग का पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, तो आपको तो बिल्कुल ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए थी, उम्मीद करता हूं। So that I explained fork, process and fork. So again, जब आप PS के साथ करते हैं तो
Tabish bhai, your voice is too low. I haven't listened anything from Tabish. Whether he's talking something. Sure, he can ask. If you can hear him, Fawzan, I don't know why. Anyone else? Salman, can you hear Tabish? Yahya, can you hear Tabish? लेकिन फौजान अगर आपके पास माइक है तो आप वही चीज रिपीट कर दें. There is some issue with him. Although याशा वो किसी एक ही यूजर को सेंड मैसेज में एवरीवन नहीं है, लेकिन अगर उसका माइक ऑफ है तो फिर फौजान कैसे उसको सुन रहा है? दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक, बट नो प्रॉब्लम. फौजान अगर आप सुन रहे हैं तो आप लिख दें या बोल दें. आई विल रिस्पॉन्ड. Sir, my question is, sir, how many connections are possible at the same time? It is इसको मैं दो तरह से जवाब दूंगा, क्योंकि इसके दो ही तरह से जवाब पॉसिबल शायद है. एक तो इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पोर्ट्स. लिमिटेशन आप पूछ रहे हैं तो आपको पता है 65,000 पोर्ट्स अवेलेबल हैं उसके पास, तो 65,000 कनेक्शन वो दे सकता है. दैट सिंपल. अगर आप ये पूछ रहे हैं कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन ये है कि इस पोर्ट पे एक वक्त में कितनी क्यू बन सकती है, तो इसको कहते हैं बैकलॉग. तो जो एप्लीकेशन राइटर होता है वो बैकलॉग डिफाइन करता है कि अगर जिससे अभी आप देखा ना कि ग्रीन वन आया, रेड वन आया, ब्लू वन आया, चले एक और कलर भी ले लेते हैं, येलो वन आया, तो ये एक ही वक्त में भी सारे के सारे पोर्ट 80 पे आ सकते हैं. तो होता यह है कि ओके, तो होता यह है कि ये यहाँ इस पोर्ट के ऊपर एक बैकलॉग डिफाइन करता है. तो उस बैकलॉग में अगर उस वक्त ये पहले वाले को लेट करें ब्लैक वन को सर्व कर रहा है तो दूसरा वाला यहाँ पे आके वेट में पड़ जाता है. जो अगर जब वो पहला वाला निकल जाता है दूसरे पोर्ट पे चला जाता है तो नेक्स्ट वन पोर्ट नंबर 80 पे आ जाता है, तो इसको बैकलॉग कहते हैं. अदरवाइज लिमिटेशन इज द नंबर ऑफ पोर्ट्स विच इज ह्यूज नंबर अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो. और आजकल तो आपको पता है कि एक सर्वर नहीं होता, especially these servers are in the data center and multiple instances of the server are there. Multiple instances of the server are there. So there is to some extent I can say infinite, although infinite is very, yeah, because of the virtualization. ओके जेंटलमैन, सो लेट मी कंटिन्यू देन. हाँ, अब मैं बात कर रहा था कि एक तो मैंने आपको बताया पीएस के जरिए जो रनिंग प्रोसेसेस है मैं वो देख सकता हूं. इसके मुकाबले में अगर मैं टॉप देता हूं, टॉप, तो टॉप भी यही काम करता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये लिसन में ये वेट में पड़ जाता है, ये वेट में पड़ जाता है. इसको मैं क्लियर करता हूं दोबारा और पीएस की बजाय टॉप देता हूं. तो देखिए जितने प्रोसेसेस थे और ये मुझे इसने प्रोसेस देखिए ये मुझे वापस नहीं दे रहा प्रॉम्प्ट. इसका मतलब है कि जो जो नए नए प्रोसेस, नए नए एप्लीकेशन या प्रोसेसेस आ रहे हैं ये उनको भी मुझे दिखा रहा है. तो ये नॉर्मली जब आप सॉक में बैठे होते हैं, व्हेन यू आर सिटिंग इन सॉक एंड यू आर रनिंग दिस टॉप, तो यू आर, देखिए टॉप आपको नजर भी आ रहा था अभी कुछ देर पहले. सो व्हाट इज बीइंग डन, देखिए ये बता रहा है कितने टाइम से, कितनी मेमोरी इसने इस प्रोसेस ने खाई, कितनी सीपीयू इसने लिया फॉर एग्जांपल. सो कौन इसका यूजर है, उसका पीआईडी क्या है एंड सो ऑन. तो यू कैन सी के टॉप का जो है पीआईडी जो है वो 8715 है, 8715 है. तो हम इस प्रोसेस को, चले इसी प्रोसेस को, टॉप के प्रोसेस एक तो निकलने का बड़ा आसान तरीका है, आई शुड प्रेस स्मॉल क्यू एंड आई एम आउट.
लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड लाइक दिस. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव द टॉप and the process is for the top is 8726 8726 8726. Do remember 8726. So I open another terminal and I say kill PID 8726. आर्गुमेंट मस्ट बी प्रोसेस और जॉब आईडी. तो हमने जॉब आईडी दी, इसको क्या दिया और हमने हाँ निकल गया ना, निकल गया है. इसका मतलब हमने प्रोसेस को किल कर दिया है, अदरवाइज तो ये निकल नहीं रहा. टॉप जब दिया तो ये तो इस हालत में था, निकल नहीं रहा था. ठीक है, इस टॉप का मैंने अभी देखा 8736 8736 रनिंग है. आई से 8736 इंटर किया, यहां पे देखा तो बाहर निकल आया, निकला हुआ है. तो इसका फायदा क्या है जेंटलमैन आपको, कि आप कोई भी प्रोसेस, रनिंग प्रोसेसेस देख सकते हैं और किसी भी प्रोसेस को, चाहे वो पीएस के जरिए उसका पीआईडी देखें या टॉप के जरिए देखें, आप उस प्रोसेस को किल कर सकते हैं. सो ये हमने कर लिया. अब हम ये काम मैंने आपके साथ पहले ही कर लिया है कि मालवेयर ऑन द लिनक्स मशीन, मालवेयर ऑन द लिनक्स मशीन, कि आपको अगर पता चल जाए कि आपकी मशीन के ऊपर कोई भी वायरस है, वॉर्म है, कुछ भी है. जैसे एक एग्जांपल हमने, हाँ एक और तरीका भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह. एक तरीका तो शायद हमने पहले भी बात की थी कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग के जरिए मालूम करते हैं कि कौन सी मशीन पे कौन कौन सी सर्विसेज और कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, वर्किंग है, ब्ला ब्ला. ये सारी चीज, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा वर्जन है, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं और हमें करना चाहिए. हाँ आज वो नहीं है, आमिर नहीं है. ओके, सो एक तरीका इसका ये भी होता है कि हम उसको टेलनेट करते हैं. मिसाल के तौर पे करके देखते हैं कि अगर मैं टेलनेट करूं, पहले मैं करता हूं www ping www.cisco, चलें cisco.com, facebook.com, facebook.com, इंटर. सो आईपी एड्रेस इसका चुरा लें 69.171.250.35. कंट्रोल सी कर देता हूं, बाहर निकल आया. अब मैं करता हूं टेलनेट. फॉर एग्जांपल टेलनेट 69.171.250.35 इंटर. अगर इसने ब्लॉक नहीं किया हुआ तो मुझे मिल जाएगा कनेक्शन, और अगर इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, टेलनेट अलाउड नहीं है, तो नहीं मिलेगा. लगता है कि नहीं मिलेगा. सलमान याह्या, कैसे लग रहा है कि ये कोर्स इंटरेस्टिंग है या बोरिंग है? चलिए हम कोई दूसरी साइड देखते हैं. कंट्रोल फिलहाल तो थोड़ा बहुत सीख www.cisco.com and the address is 23.9.25.159. ठीक है, कंट्रोल सी करके बाहर निकल जाते हैं. क्लियर करता हूं तो ये पता चला कि इसके ऊपर कोई भी क्लियर. और अब टेलनेट करता हूं और एड्रेस देता हूं 23.9.25.159.
9.25.159. oh my god, no, like this, control C अगेन दिस, और पोर्ट नंबर देता हूं 80, कनेक्ट हो गया। मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखता हूं, इंटर करता हूं, लाजमी तौर पे ये HTTP उसको टेलनेट के फॉर्मेट में नहीं है, तो देखते हैं क्या जवाब देता है। तो ये इस किस्म की छोटी छोटी ट्रिक्स करके हम पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि जी इस सर्वर तो है जिसने मुझे जवाब दिया, जिसको मैंने पिंग किया, इसका ये जी देखें, पता चला कि इसके ऊपर ये सर्वर चल रहा है, उसका वर्जन ये है और ब्ला ब्ला। तो बेहतर ये होता है कि हम ये देख सकें कि अब आप इसको कॉपी करके अकामय हो घोष को ये किस सर्विस को दे रहा है, और क्योंकि HTTP का हमने नहीं लिख कर दिया, तो इस तरह के गलत काम करके हम फायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो रूट किट का मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया कि रूट किट किस तरह इंस्टॉल करते हैं, किस तरह उसको रन करते हैं। ओके, अब हम आते हैं इस तरफ पाइपिंग। पाइप का मतलब ये होता है जेंटलमैन कि आप, पाइप का मतलब ये होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। पहले मैं आपके किसी क्वेश्चन को देखना चाहता हूं, कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट मी कंटिन्यू देन। सो पाइपिंग, पाइपिंग का मतलब ये होता है विच इज अ वेरी पावरफुल वे टू वर्क। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने लिनक्स को कह दूं कि आप ls करें, तो ls -l कर दें, तो आपको जितने भी फाइल्स हैं वो ये दिखा देगा, विच इज नाइस। अल्दो के मैं इसको ये भी कह सकता हूं ls -al, तो इसने और ज्यादा फाइलें मुझे दिखा दी, इट सीम नाइस। लेकिन जेंटलमैन अगर हम, या इसके मुकाबले में अगर मैं ये एग्जाम का कर देता हूं कैट और किसी फाइल को ओपन करता हूं /war/logs, आपको पता है लॉग्स में तो बहुत कुछ होता है, किस लॉग्स को देखता हूं, सिज लॉग्स को देखना चाहता हूं, सिज लॉग इसको देखना चाहता हूं, तो इसमें तो बहुत कुछ है। अब मैं बैठ के इसको पढ़ता रहूं, ठीक है, फाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे पाइपिंग लगा दूं, पाइप का मतलब एक खास किस्म का खास किस्म की मैं चीज इसमें से देखना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ इसमें से वो मैसेजेस या लाइंस देखना चाहता हूं जिसमें HTTP है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, यही मैं लिखता हूं कैट, यही मैं लिखता हूं /war, चलेंगे मैं इसको दोबारा क्यों लिखूं, /war, और मैं इसको पाइप करता हूं। पाइप का मतलब ये लाइन, और मैं इसको कहता हूं ग्रेप करो, GREP HTTP को, सिर्फ HTTP वाले मुझे दिखाओ, बाकी ना दिखाओ मुझे। ये देखें जी, जहां जहां HTTP था वो दिखाई, वो लाइन से मुझे दिखा दी इसने। तो पाइप का फायदा ये होता है, इट इज अगेन वेरी पावरफुल वे कि आप अपनी मर्जी की चीजों को देख सकते हैं, आप अपनी मर्जी की चीजों को देख सकते हैं। या इसी तरह जैसे मैंने अभी ls दिया था, ls -al, और इसको मैं पाइप करता हूं, पाइप करता हूं और लिखता हूं grep, GREP grep होस्ट, जिसमें होस्ट होगा इसमें भी नहीं है। जिस तरह ls माइनस, अभी अगर चले हम पहले इसको कंप्लीट देख लेते हैं, ls -l, इसमें हम अब देखना चाहते हैं पिक्चर्स, मिसाल के तौर पे पिक्चर्स आपको नजर आ रहा है, सिर्फ पिक्चर जहां पे हो वो उठा के मुझे दो। मैं कहता हूं पाइप ग्रेप पिक्चर्स, डाउनलोड्स क्या था, कोई भी नाम दे दें जो अवेलेबल है, पिक्चर्स, ठीक है जी, PICTURES। देखें सिर्फ उसने आपको पिक्चर्स का वो दिखा दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिखाया। तो इसका फायदा ये ग्रेप का ये है, देखिए आप इस वाले में होते हैं, पहले आप इसमें ढूंढते कि पिक्चर कहाँ पे है, अब आपको सिर्फ वो चीज सामने ले आएगा। तो ये पाइपिंग का फायदा है कि आप सिर्फ वो चीजें फिल्टर कर सकते हैं जो कि
अब देखना चाहते हैं। सो डेमो है जो कि आप अपनी नेटकैट में देख लेंगे, और इसके साथ ये चैप्टर क्लास हो गया, फिनिश हो गया। सो जेंटलमैन, अब चैप्टर 3 और 4 का एग्जाम आपको दिया जा सकता है, जो कि आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह मिल जाएगा वीकेंड के दौरान ही। तो इन 2 चैप्टरों को पढ़ के मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कर जाएं। ताबिश ने लिखा पाइपिंग इज कंबाइनिंग कमांड, यस। कमांड 1 कमांड 2, यस। कमांड 1 का जो आउटपुट होगा, कमांड 2 जो होगी, कमांड 2 में ग्रैप होगा। और क्या लिखा है, कमांड 1 आउटपुट विल एक्ट एज इनपुट टू, यस। कमांड 1 का जो आउटपुट होगा वो कमांड 2 के लिए इनपुट के तौर पे काम करेगा। सो जेंटलमैन, दिस चैप्टर इज ओवर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ काम जो है वो आपने नहीं किया। वेरी राइटली मेंशन बाय फौजान, फिल्टर समथिंग स्पेसिफिक, वेरी राइट। और एज ए सिक्योरिटी एनालिस्ट हमारा कई जगहों में हमारी जरूरत होती है कि हम कुछ स्पेशल चीज देखना चाहते हैं, तो उसको फिल्टर करके इंस्टेड ऑफ दिस पूरी 10,000 लाइन की फाइल को हम पढ़ना शुरू कर दें और 3 दिन पढ़ते रहें। व्हाई नॉट टू फिल्टर इट एंड save our time. Tabish, I have raised the hand. If you have any question, I am listening you, Tabish. Okay, the raise hand has been removed. So it means there is, if there is any question from Fozan, Salman, Yahya, I'm here to answer you. So if you don't have question, please during the weekend read these chapters and try to attempt the exam. Thank you very much, everyone. See you inshallah on Wednesday. Allah Hafiz.